ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ. Good evening to everybody. Today is the Christmas celebration by Anodin Foundation. I thank for all the chief guests who reside here on the stage. Baba Malinath ji, Father Manan Seth, Gausbhai, Pipalgarh sir, and Bode ji, Amarkota ji, Prasanna DSI, Bachchan Sahab, Sanjay sir, Principal Madam, Amit Kote, Vice President of Municipality, Angelkar sir, Manjula Tengundi, Sudarshan Chandu sir, and Maruti Budde sir, हमारे काउंसलर साहब और बाकी जिसके भी नाम छूट गए उनका मैं सॉरी बोलता हूँ. Today is the celebration of the Christmas. We thankful, we are thanks that the God has created the beautiful country and the world and the people in this world. So God has created everyone to serve the people. The Christian people are very educated and they are good in service. They are humble. They are quietly humble. That is, they simply work for the service of the poor people. That is Mother Teresa Nightingale who served the 90 years to the serve for the people, for the serving in health service. As far as Christian people, they are good in education field and health service. So today, Anodin service, which are celebrating the Christmas celebration, then apart that, they are celebrating for the eye donation camp they are keeping. That is very appreciable. That is very good. That is, they are organized the eye donation camp. I want to thank from the behalf of my brother Minister Rahim Khan sir that any help needs from Anodin Foundation will help you to come forward by saying few words. Happy Merry Christmas to everybody. Thank you everyone. कोटे साहब, आप हर साल कीजिए. हमेशा ऐसा एक त्योहारों के मौके पर एक सोशल काम भी होना चाहिए. खाली एक हमारी खुशी तो है, त्योहार की खुशी है. हम त्योहार में एक फेस्टिवल में खुशी तो मनाते हैं, साथ में दुनिया को भी मैसेज जाना चाहिए. आज आप एक मैसेज दिए हैं. मैं आपको, आपके कास्ट को, आपके इस काम को सैल्यूट करता हूँ. और मैं ये महीने में ऐसे और भी प्रोग्राम होंगे. मुझे और भी प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं. मैं बड़ा खास तौर पे क्रिश्चियन समाज से बहुत करीब हूँ. मेरा बचपन से लेके आज तक मेरी उम्र 58 साल है. मैं ज़्यादातर हमारे क्रिश्चियन दोस्तों में बैठता उठता हूँ. उनके स्वभाव से, उनके कल्चर से, उनके एटीट्यूड से, उनके रहन सहन से, उनके कल्चर से बड़ा मैं मानूस हूँ. बहुत ही मैं उनसे खिंचा हुआ हूँ, उनके करीब हूँ. वो ये जो उनका जीसस का पैगाम है, दुनिया में अमन शांति फैलाना, वाकई एक ऐसा पैगाम है जिसके बगैर लोग, ये दुनिया नहीं है. अगर शांति अमन नहीं हो तो ये जीसस का जो मैसेज है अमन और पैगाम का, वो रहती दुनिया तक लोगों के बीच में फैलना चाहिए. और आप लोगों का जो देश को, समाज को जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस के सेक्टर में, हेल्थ सर्विस और एजुकेशन सर्विस के सेक्टर में, वो रिमार्केबल. उसकी कोई मिसाल कायम नहीं कर सकता. इसका कोई कंपटीटर नहीं. आपके मुखालिफ लोग भी आपको मानते हैं कि आपका बहुत रिमार्केबल सर्विस है. आप ऐसा ही करते रहिए और अमन और शांति फैलाते रहिए. इतना बात कहते हुए मैं बात खत्म करता हूँ. कम से कम 30 फंक्शन अटेंड किया हूँ, मगर इस फंक्शन में बहुत ही अच्छा मजा आया है, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग
आए हैं, सबसे खुशी की बात है। मगर कहीं भी फंक्शन हो रहे हैं फेस्टिवल के, सिर्फ आप ही कमेटी के लोग थे। आज मैं आप इस मंच पर देखा हूँ कि ऑल कास्ट के लोग हैं। मैं इस प्रोग्राम करने वालों को मैं सबको बधाई देता हूँ और एडवांस हैप्पी क्रिसमस की भी बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को। और ये शांति प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो। अभी अभी हमारे सीनियर नेता इनगुंदी साहब बता रहे थे बाबा साहब की तरफ, वो बाबा साहब का संविधान है बोल के इस मंच पर हम सब बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान जो है वो आज हम सबको फ्रीडम दिया है बात करने के लिए, वरना वो संविधान ना होता तो हम भी ना होते। क्योंकि बाबा साहब का हम कितना भी नाम लिए वो कम है। और यहाँ पर पूरे जितने लीडर्स आए हैं मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग हैं, बहुत टाइम हुआ है। मैं इतना कहते अपनी बात खत्म करता हूँ। ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಅನುದಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇ, ಯೂನಿಕ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ. ಆತನು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ದೇವರಾದ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೋನ್. ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ
ಒಂದು ವಚನಗಳು 26ರಿಂದ 38ರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. First of all, I would like to thank all of you for your gracious presence here. We are honored, and the main intention behind starting this foundation is to spread awareness about eye donation. So instead of letting your eyes die with you, if you donate your eyes, it will enlighten the lives of 2 people. So I would request you to please donate your eyes. You do not have to do anything. So in these days it has become very easy to donate eyes. You have to just log into it's a government organization, government website, www.jeevanasarthakate.karnataka.gov.in, and register yourself there. And then you will get all the procedures. I do not like to list down and all the procedures here in the interest of time. I would like to thank the Anudina Foundation, the team here, all the people who have helped here. Everybody who has seated here has helped this. I wouldn't like to take anybody's name, be it Albert Kote, Vaijinath sir, Chandu sir, Sanjay Jesse sir, everybody. I'm sorry if I have missed anybody's name. Please pardon me. And last but not the least, the backbone of this program, who has given the true meaning to the name of the Karyadarshi, and who has done most of the karyas. In fact, who has taken the load of this program, Mr. Mahan Kote, Appaji, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.